Hello everyone. Today we are going to discuss our new topic, that is sexual reproduction in animals. In the previous videos we had learned about the sexual reproduction in plants. Okay. So sexual reproduction is the process of the reproduction in which both the sexes are involved. Okay. So in the case of the animals are divided into the two category. Okay. The first category is the continuous breeders and the second category is the seasonal breeders on the basis of their activity during the reproductive phase. Okay, during the reproductive phase they show different types of the activity, and on the basis of that type of the activities the animals are divided into the two categories. The first category is the continuous breeders and the second category is the seasonal breeders. Now the first category, continuous breeders, as the name indicate, continuous. Okay, some animals remain reproductively active throughout their reproductive phase. Okay, some animals remain reproductively active throughout their whole reproductive phase, and such type of the animals are known as the continuous breeders. Human are the example of the continuous breeders. Another example of the continuous breeders are the monkeys, apes, etc. Okay, so these are the continuous breeders which remain active throughout their reproductive phase. And the second category is the seasonal breeders. As the name indicates, seasonal breeders means in a particular season. So some animals which become reproductively active only during the favorable season in their reproductive phase, such animals are called the seasonal breeders. An example of the seasonal breeders are the dogs, birds, frogs, lizards, etc. So अगेन कंटिन्यूस ब्रीडर्स एंड द सीजनल ब्रीडर्स. तो क्या होता है, आपका जो एनिमल्स होते हैं आपके, वो आपका कुछ एक्टिविटी शो करते हैं, आपके कुछ कंटिन्यूसली एक्टिविटी शो करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज में, और कुछ क्या करते हैं आपका कि बस जो उनका फेवरेबल सीजन होता है उसी में वो क्या होते हैं आपके एक्टिव रहते हैं आपके रिप्रोडक्टिव फेज में. ओके, तो इनके बेसिस पे आपके दो तरह के एनिमल्स होते हैं. पहले एनिमल्स हो गए आपके कंटिन्यूस ब्रीडर्स, दूसरे एनिमल्स हो गए आपके सीजनल ब्रीडर्स. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. In animals, morphological and physiological changes occur prior to and post reproductive phases. It means that before and after the reproductive phase there are some morphological and physiological changes in the animals. And next point is that during the reproductive phase, now I am coming to the point that during the reproductive phase, okay, during the reproductive phase there are three types of the phases. The first is the juvenile or vegetative phase, second is the reproductive phase, and the third is the senescent phase. Okay, so we are talking about the reproductive phase. In the case of the reproductive phase, in the case of the mammals, only in the case of the mammals, I am talking about only about the mammals. In the case of the mammals, during the reproductive phases the activities of the ovaries, accessory duct and hormones exhibit the cyclic changes. Which organs? We can say in the simple terms that during the reproductive phase the reproductive organs of the female show some cyclic changes, and these cyclic changes are of two types. The first is the ostrich cycle and the second is the menstrual cycle. तो ये क्या होता है आपका, जो आपके मैमल्स होते हैं, मैमल्स के केस में जो आपकी फीमेल्स होती हैं वो आपका क्या करती हैं, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें जो उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आपके, उनमें आपके कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, और उन साइक्लिक चेंजेस के बेसिस पे आपके जो मैमल्स होते हैं वो दो कैटेगरी में क्या होते हैं आपके डिवाइड होते हैं. और वी कैन से दैट कि वो आपके दो तरह के आपके साइकिल शो करते हैं. कुछ एक टाइप का साइकिल शो करते हैं मैमल्स, और कुछ जो अलग मैमल्स होते हैं वो आपका दूसरे टाइप का साइकिल शो करते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने पढ़ा है. इट इज द साइकिल विच फाउंड इन द ह्यूमंस, इन द ह्यूमन फीमेल्स. सो द फर्स्ट इज द ऑस्ट्रिच साइकिल एंड द सेकंड इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो द साइक्लिक चेंजेस अकर इन द नॉन प्राइमेट्स, in the female of the non-primates is known as the ostrich cycle, such as the rats. Example है आपका rats, sheep, deers, cows, etc. And if we talk about the mammals, okay, in the case of the mammals, primates shows the menstrual cycle. Example are the humans and monkeys, okay, apes, etc. So there are two category of the mammals. The first is the non-primates and the second is the primate. The non-primates mammals shows the cyclic changes in their female reproductive system, and this type of the cycle is known as the ostrich cycle, and the cyclic changes shown by the female reproductive system of the primates are known as the menstrual cycle. Okay, there are the two types of the cycle. Now differences among these type of the cycle. These two, first is the ostrich cycle and the second is the menstrual cycle. The first difference is that in the case of the ostrich cycle, which is found in the non-primates, the females show strong irresistible sexual urge, but in the case of the menstrual cycle the female do not show irresistible sexual urge. The new term is the sexual urge. What is the sexual urge? It is a motivational state.
or we can say that it is a sexual desire, it is a motivational state or an interest in sexual object or activities. This is the state of the motivational state, or it is the stage of the interest in the sexual object or activities. Okay, so this is the first difference between the menstrual cycle and the ostrus cycle. Now coming to the second point, that is there is heat production at the time of the ovulation. There is heat production at the time of the ovulation, and copulation occurs only at that period. But in the case of the menstrual cycle, there is no heat production and copulation can occur during any time of the cycle. Okay, so this is the second difference between the ostrus cycle and the menstrual cycle. This side is of the ostrus cycle and this side is of the menstrual cycle. In the case of the ostrus cycle, there is a heat production during the ovulation. What is the ovulation? The production of the egg by the ovaries. ओवरीज के थ्रू जो आपका एग के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को आपका ओव्यूलेशन बोला जाता है. तो इन द केस ऑफ द ऑस्ट्रिच साइकिल, यानी कि जिन भी एनिमल्स में आपका ऑस्ट्रिच साइकिल पाया जाता है, उनमें क्या होता है, जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, आपका हीट का प्रोडक्शन होता है. और हीट के प्रोडक्शन जब होता है आपका, तो उसी टाइम पे आपका कॉपुलेशन की प्रोसेस भी क्या होती है, आपकी सक्सीड होती है. वो केवल उसी टाइम पे क्या कर सकते हैं, अपने साइकिल में कॉपुलेशन की प्रोसेस कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ द menstrual cycle, in the case of the menstrual cycle, there is a no heat production during the copulation. copulation के टाइम पे आपका there is a no heat production during the ovulation. ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका कोई भी आपका हीट का प्रोडक्शन नहीं होता है. और जो आपका कॉपुलेशन होता है वो पूरे आपके जो आपका साइकिल है, साइकिल के दौरान कभी भी आपका क्या हो सकता है, आपका कॉपुलेशन की प्रोसेस हो सकती है. सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस. फर्स्ट डिफरेंस इज द सेक्सुअल अर्ग, सेकंड डिफरेंस इज द हीट प्रोडक्शन एंड कॉपुलेशन. नाउ द थर्ड डिफरेंस, इन द केस ऑफ द ऑस्ट्रिच साइकिल, ब्लीडिंग एंड शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम डू नॉट अकर्स, and in the case of the menstrual cycle, the shedding of endometrium and bleeding occurs. So there is a term that is the endometrium. As we know that the uterus has 3 layer and this is the layer of the uterus. तो क्या होता है आपका, जब आपका साइक्लिक चेंजेस होते हैं आपके बॉडी में, तो क्या होता है, आपका जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स के केस में क्या होता है, आपका जो एंडोमेट्रियम होता है, अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है आपका, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो यूट्रस होता है वो अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करता है, आपका तैयार करता है. ठीक है, ताकि उसमें आपका एग एम्बेडेड हो सके, आपका जाइगोट क्या हो सके, आपका स्टैब्लिश हो सके. तो जब आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, तो प्राइमेट्स के केस में क्या होता है, आपका जो एंडोमेट्रियम होता है वो आपका टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है उसका, वो आपका ब्रेक ऑफ हो जाता है. और जब वो आपका टूटता है तो क्या होता है, आपका ब्लीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है. ठीक है, ब्लीडिंग की क्या होती है, आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है. उस ब्लीडिंग की प्रोसेस में क्या होता है, आपका ब्लड और जो आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं वो आपका वेजाइना से क्या होते हैं, आपके बाहर रिलीज हो जाते हैं. तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है, आपका प्राइमेट्स का होता है, जिनमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है. लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनके केस में आपका ना तो एंडोमेट्रियम आपका ब्रेक होता है और ना ही आपकी कोई ब्लीडिंग की क्या होती है, आपकी प्रोसेस होती है. अगेन द एग्जांपल ऑफ द ऑस्ट्रिच साइकिल के जो एग्जांपल हैं आपके जिन एनिमल्स में होता है, आपको वैसे तो पता ही हो गया, दैट इज द काउज, शीप, rats, deers, dogs, tigers. And the example of the menstrual cycle, these are the humans, apes, monkeys, etc. So there are the three main differences in the ostrich cycle as well as in the menstrual cycle. The first difference is on the basis of the sexual arc. In the ostrich cycle, female shows the sexual arc, but in the case of the menstrual cycle, the female do not show the sexual arc. In the case of the ostrich cycle, there is a heat production during the process of the ovulation, but in the case of the menstrual cycle, there is a no heat production during the process of ovulation. And in the case of the ostrich cycle, the copulation occurs only at the heat producing period. But in the case of the menstrual cycle, the copulation can occur any time during the cycle. And in the case of the ostrich cycle, the bleeding and shedding of endometrium do not occur. But in the case of the menstrual cycle, the shedding of endometrium occurs and the bleeding occurs. Okay, now coming to our next point, that is the sexuality in the animals. As we know that in the case of the plants, there is also the sexuality. They are the monoecious, dioecious. हमने पढ़ा था, आपका पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोनोशियस क्या होते हैं, आपके डायोसियस क्या होते हैं. Now same condition is there in the case of the animals. Hermaphrodite is the term. The first is the bisexual. Bisexual or hermaphrodite term is the same. Okay, what is the meaning of the bisexual organisms? On the basis of the sexuality, the organisms are of the two types. The first category of the organism is the bisexual or hermaphrodite. This is the second term for the bisexual organism. When a single organism contain
both the reproductive organs, male reproductive organs as well as female reproductive organs, then this condition is known as the bisexual or hermaphrodite, or we can say that when a organism contain both the male as well as female reproductive organs, this organism is known as the bisexual or hermaphrodite organism. Mainly the lower organisms are the bisexual, such as the earthworm. Earthworm is important. Second is the tapeworm. Third is the leech, and fourth is the sponges, etc. So we can see that these all are the lower organisms. Mainly the bisexuality is found in the lower organisms. Now coming to the next point, that is the unisexual. Unisexual means when both the sexes are separate with distinct male and female individuals. It means that a particular individual contain either male reproductive system or female reproductive system, then this condition is known as the unisexual condition. Human, cockroach are example. Many example are there. Mainly chordates are the example of the unisexual organisms, or we can say that animals, and the lower organisms, or we can say that non-chordates are mainly the example of the bisexual or hermaphrodite organisms. I am repeating the term bisexual and unisexual. Bisexual means when a single parent, or we can say that when an animal contain both the sex organs, male sex organ as well as female sex organ, then this type of the organism or animal is known as the bisexual or hermaphrodite. Second is the unisexual, when an organism contain either male sex organ or female sex organ, then this type of the organism or animal is known as the unisexual organism. Okay, so this is the diagram of the earthworm. Earthworm is the bisexual organism or hermaphrodite organism. We can see that testis sex with the testis and ovaries both are present in the case of a single animal. These are the testis. These are the testis sac, and inside the testis sacs are the testis, and these are the one pair of the ovaries. So this organism is known as the bisexual or hermaphrodite organism. One more important point about the earthworm is that in the case of the earthworm, the sexual reproduction is there. The sexual reproduction is there, but with the different organisms. It means that in this case, in the case of the earthworm के केस में क्या होता है, आपका प्रोटेंडी पाई जाती है. प्रोटेंडी कहने का मतलब है कि जो आपके मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले ही क्या हो जाते हैं, आपके मैच्योर हो जाते हैं. तो इस कंडीशन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने साथ क्या नहीं कर सकता, आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. इसको दूसरे एनिमल की या दूसरे ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें प्रोटेंडी पाई जाती है. प्रोटेंडी कहने का मतलब है कि जब आपके टेस्टिस यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका पहले मैच्योर हो जाता है, किससे, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. This is very important point for you about the earthworm. Now coming to the next point, this is the condition. It is the sex organs of the cockroach. ये आपका cockroach क्या होता है आपका, it is a unisexual animal. It is a unisexual animal. In this case, the male organism contain the male reproductive system, and the female organism contain the female reproductive system. So we can see that in the case of the male body, testes are there, one pair of the testes are there, and in the case of the female organism, one pair of the ovaries are there. So it is the condition of the unisexual organism. Cockroach is the unisexual organism. Now one more important point is that sexual dimorphism. What is the sexual dimorphism? As the name indicates, dimorphism means difference and sexual means on the basis of the sex. So the condition where two sexes of the same species exhibit different characteristics beyond the differences in their sexual organs. It means that when we can, if we have more than one type of, if we have more than one organism, then we can determine which one is the female and which one is the male on the basis of their external morphology. तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को देख करके बता सकते हैं कि वो आपका मेल है या फिर आपका फीमेल है. तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ द ह्यूमंस, वी कैन से विच वन इज द मेल एंड विच वन इज द फीमेल. हम बता सकते हैं अगर हमारे सामने आपके दो ऑर्गेनिज्म खड़े हैं, आपके एक मेल है और एक फीमेल, और हमसे पूछा जाता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो हम उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा आपका मेल ऑर्गेनिज्म है और कौन सा आपका फीमेल ऑर्गेनिज्म है. तो यही कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, आपकी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाती है, जब हम आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपका मेल और फीमेल में क्या कर सकते हैं, आपका डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो दिस इज द समरी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स. More important point is that the animals are of the two types. The first is the continuous breeders and the second is the seasonal breeders. Continuous breeders remain active, reproductively active throughout their reproductive phase.
but the seasonal breeders remain reproductive active only during their favorable phase of the reproductive period. Okay, now next point is that the ostrich cycle, and the second is the menstrual cycle, and unisexual organisms and bisexual organism. Bisexual organisms are also known as the hermaphrodite organism and sexual dimorphism. Okay, this is the summary about the sexual reproduction in the animals, and in the next video we will discuss about events in sexual reproduction.